recent discovery जिसने साइंटिस्ट ने देखा है कि जो सोलर सेल की जो टेक्नोलॉजी आ रही है अपकमिंग पेरोव्स्काइट सोलर सेल उसकी लाइफ टाइम एक्सपेक्टेंसी जिसमें वो अवेलेबल होगी मार्केट ट्रेंड पे इन दी रूफटॉप और रेजिडेंशियल रूफटॉप्स। तो ये अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, आप देख सकते हैं जनवरी 26 2023। उस हिसाब से हम देखेंगे ये रिसेंट आर्टिकल में क्या कह रहे हैं ये लोग। और प्लीज मेक श्योर लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड चलते हैं वीडियो में। सो as you can see, the recent article in PV magazine, scientists assess the lifetime for the perovskite PV to become competitive on rooftops. उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या क्या competitive वजह है जिसने उन्होंने डिस्कवर किया जो ये आ सकते हैं rooftop PV पे। First of all, researchers say that its lightweight, high-performance perovskite solar modules could soon become competitive with crystalline PV modules in the residential segment, as such products will likely have lower manufacturing and balance of system costs in the future. टेक्नोलॉजी आ रही है compete करेगी उस क्रिस्टलाइन पीवी सोलर मॉड्यूल से पर टेक्नोलॉजीज की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी आ सकती है सोलर पीवी मार्केट पे रेजिडेंशियल हाउसेस पे अप्लाई हो सकता है। The international research group has assessed what levels of efficiency and stability perovskite solar cells have to achieve to become an economically viable technology to compete with the crystalline silicon cells in the rooftop segment. So researchers देख रहे हैं क्या levels होती हैं जिसमें उनकी efficiency और stability होती है उस cell के लिए तो achieve कर सकते हैं ताकि वो उस level पे आ जाएं। The weight of photovoltaic modules drives up costs for installation, transportation, and labor. The research lead author and director of Institute for Photovoltaics, University of Stuttgart, told PV Magazine, utilizing lightweight, high-performance perovskite modules can lower these costs and open a new market in which perovskites are a competitive option. तो देख रहे हैं कि जिस तरह से ये वेट होती है perovskite cells उनकी जो लाइट वेट हाई परफॉर्मेंस उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स और लोअर करें ताकि वो इजीली cost effective and market में होए बहुत competitive होए। The scientists assess the necessary lifetime of a perovskite module, which they define as the time until a module has 80% of its initial efficiency as a function of efficiencies to be competitive in the levelized cost of electricity LCOE. तो assess करें उनकी जो lifetime expectancy efficiency for the solar perovskite module to be at least 80% of इसकी जो शुरुआत efficiency उसकी at least 80% तक वो देख रहे हैं ताकि उसकी जो levelized cost of energy LCOE उसके अच्छे रहे। They found out that the perovskite solar modules might need to provide 20% efficiency for at least 36 years or 25% efficiency for a minimum of 21 years if they want to compete with conventional PV panels. तो देख सकते हैं आप हाउ मच उनकी एफिशिएंसी उनको चाहिए एटलीस्ट 20% चाहिए उनको 36 मिनिमम प्रोवाइड करना है या फिर 21 years की 25% एफिशिएंसी ताकि compete करे with the normal PV panels in market आजकल। This demonstrates that even with a significantly lower production cost of perovskite, it is challenging to become competitive with silicon, mainly because of low LT of current perovskite solar cells and the limited experience with perovskite module stability, said the scientists. तो देख रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है बहुत लोअर प्रोडक्शन में उनकी बहुत मुश्किल है जिसमें उनकी एफिशिएंसी compete करे सिलिकॉन के साथ क्योंकि जिस तरह से लिमिटेड एक्सपीरियंस और काम स्टेबल हो सकता है इन मॉड्यूल में। तो इसलिए देख रहे हैं कि how the perovskite tech may have some interesting cards to play if the scientific community and the industry will become able to reduce its installation and structural balance of system costs, as these usually account for around 10% of a PV system cost. So दिखाने का इसका भी पॉजिटिव ये है कि ये जो बैलेंस ऑफ सिस्टम जो ओवरऑल कॉस्ट होती है सोलर सिस्टम की इट ओनली टेक्स अबाउट 10%। जो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ द सोलर सिस्टम हमको पता है कि पीवी पैनल्स महंगे होते हैं लेकिन कह रहे हैं कि अकाउंट फॉर एटलीस्ट 10%। So these lightweight or flexible modules, the installation becomes significantly less arduous. They said, noting that the transport costs would be significantly lowered, materials costs would be reduced if simpler installations such as gluing could replace racking. तो अगेन ये लोग फिर से दिखाने के इसके पॉजिटिव फीचर्स हैं कि लाइट वेट है फ्लेक्सिबल मॉड्यूल इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी कम होंगी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और मटेरियल कॉस्ट उसका भी कम होंगे एंड सिंपलर इंस्टॉलेशन बकेट ग्लू करेंगे चिपकाएंगे cells with each other so stick them together with glue instead of racking them so it could replace the racking system. The academics assumed a levelized cost of electricity for the United States of $0.119 per kilowatt hours to $0.136 per kilowatt for residential PV systems based on conventional panels in 2021. The estimates ranged from 0.00055 kilowatts per kilowatt hour to 0.063 per kilowatt for the same installations in 2030.
दिखा रहे हैं कि इतनी जो कॉस्ट हो रही है पर किलोवाट टू पर किलोवाट आवर्स की बहुत कम है 2030 as compared to 2021. तो देखें different साल पे. Their analysis showed that by using flexible substrates, perovskite solar modules would need to achieve lower target efficiencies of 15% and LTs spanning from 13 to 22 years to compete with crystalline silicon in the 2021 scenario, and efficiencies of 70% and LTs spanning from 16 to 34 years in the 2030 scenario. So basically टारगेट एफिशिएंसीज लोअर अचीव करवाएंगे ताकि उसकी जो लॉन्ग रेंज लाइफ टाइम उसकी ज़्यादा हो. This offers a wider corridor of possible combinations in which perovskite could reach the same electricity cost as silicon. So बहुत ज़्यादा chances है possibilities हैं जिसमें हम लोग के perovskite could same electricity cost हो सकती है per cell per kilowatt hours as the same as silicon. The scientists presented their findings and toward commercialization, lightweight, flexible, perovskite cell for residential. So basically ये उनकी फाइंडिंग्स है. I'll put the link in the description जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कैसे रिसर्च पब्लिश किया लोगों ने, कैसे लोगों ने कंक्लूजन किया है. तो ये है बेसिकली आज की वीडियो. होप आपने एंजॉय किया. प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कि आगे जाके कौन सी टेक्नोलॉजी पे कवर अप करना है, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज आ रही हैं जिस तरह से perovskite मार्केट पे इंटरेस्टिंग चीज़ें आ सकती हैं. तो make sure you like, comment, subscribe, click on the notification bell to stay up to date with these latest news, and I'll take care, stay safe. Allah Hafiz.